Climate change is, of course, a very global issue. Currently, we are living in a situation where the temperatures are rising up to 40 degrees. Climate change is, of course, a very global issue. अभी currently everybody is facing it. हम day to day situation में देख रहे हैं कितना problematic है. अभी हमारे को there was a time when my grandmother used to say कि इतनी ज़्यादा गर्मी हमने कभी देखी नहीं है अपनी lifetime में. And currently we are living in a situation where the temperatures are rising up to 40 degrees, 38 degrees. So this is a concern globally as well, and as well as in the Himalayan system. So we are trying to look at how climate change is affecting this Himalayan ecosystem and how is it affecting the flora and fauna simultaneously. So there is research going on, and we are planning to work more on it. We are collaborating with academic institutions such as the University of Kashmir. Other than that, we have collaborations with ICER Tirupati, जो कि हम near future में करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके साथ हम लोग एक project करने का plan है हमारा. Mehreen Khaleel, an IISc Bangalore alumni and founder of the Wildlife Research and Conservation Foundation, Mehreen Khaleel has an exclusive for the viewers of Salar Digital. Stay tuned. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन खलील है. मैंने अपनी एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से हासिल की है, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च. So I've done my PhD in ecological sciences, and I worked on Himalayan grey langur in Kashmir during my PhD. So in around 2018, we realized that there is a great need for raising wildlife or nature awareness in Kashmir specifically, and about the flora and fauna of Kashmir around the globe. So we started off this organization by the name Wildlife Research and Conservation Foundation. It was registered initially by me, my colleagues, and few of my friends, and later on it has grown up to now we have around 20 plus volunteers who are working remotely for various projects, and we have people who are working on ground with us here in raising awareness and in sensitizing people for towards wildlife conservation specifically. Wildlife Research and Conservation Foundation also started the Women in STEM lecture series in December 2022, which engaged more than 6,000 young female researchers in the fields of STEM. Young generations are engaged through nature camps, biodiversity walks, moth and butterfly sessions, and ordonate walks to bring focus on the lesser known fauna of the Himalayas. तो हमने 3 मेजर रोल्स डिसाइड किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. पहला वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन या नेचर कॉन्जर्वेशन को लेके, दूसरा साइंटिफिक रिसर्च जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को एनकरेज करते हैं टू थिंक मोर साइंटिफिकली, एंड थर्ड इज़ आउटरीच. आउटरीच का मतलब ये है कि हमने जो भी साइंस की या जिस तरीके से भी हमने एक नतीजे पे पहुँचे हैं यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड, उसको आम लोगों तक पहुंचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज साइंस शुड नॉट बी लिमिटेड टू इन अ सर्टन स्पेस. इट शुड मूव आउट ऑफ दैट स्पेस. इट शुड बी टोल्ड टू पीपल, टू एवरीबडी, जो भी हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उससे. सो ये 3 चीज़ें हैं जो हम फोकस कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. इसमें हम लोग अभी रिसेंटली प्लान करने का सोच रहे हैं अबाउट नेचर वेलनेस कैंप का सोच रहे हैं. दैट वे नेचर वेलनेस कैंप इज़ मोस्टली टू
involve people in activities which are more related to nature. For example, sitting quietly in front of a river body, or lake के सामने बैठ जाना, पानी के सामने बैठ जाना, to feel, to sense around yourself the nature. We understand अभी जितना भी metropolitan बनते जा रहे हैं, या जितना भी हम develop होते जा रहे हैं more towards as we are getting more and more developed, there is a lot of stress which is being accumulated in younger people, and उस चीज़ को ease out करने के लिए we are bringing people to nature spaces or to these natural habitats. इससे होगा क्या कि जो यंगर जनरेशन है, एक तो वो de-stress कर सकते हैं, और दूसरा they'll also get close to what is there in the natural spaces. Also, it will help raise awareness about nature conservation. So the main point is, if you're not aware of what is around you, or if you're not aware of the value these natural spaces give you, there won't be you won't feel a need to conserve them. So we are just trying to bring people close to the nature so that they realize what is the need for conserving nature in general. Wildlife Research and Conservation Foundation has started a registered organization focused on raising awareness about the lesser-known flora and fauna of Kashmir. The foundation aims to inculcate a sense of nature conservation among the masses through scientific knowledge, promoting through art such as illustration workshops, collaborating with young talented artists to generate material for nature conservation. The foundation's latest project include the ecology of the little-known Kashmir flying squirrel and the assessment and mitigation of rising human life interactions in the Kashmir Valley. तो हमने जब से हमने रजिस्टर किया है 2018 से, हमारी सबसे पहली कोलैबोरेशन CCMB हैदराबाद के साथ थी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. वी वेर देयर आउटरीच पार्टनर्स. जो भी वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे इन रिलेटेड टू हांगुल कंजर्वेशन, वी वेर देयर आउटरीच पार्टनर्स. मतलब ये कि हमने लोगों को जाके बताया है. वी हैव कंडक्टेड वर्कशॉप्स, वी हैव ब्रॉट इन साइंटिस्ट्स, टॉप शॉट साइंटिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. हमने यहाँ पे उनको लेकर आए हैं कश्मीर में. दे हैव स्पोकन टू स्टूडेंट्स, दे हैव हैड इन डायरेक्ट conversation about Hangal conservation. We have also had collaborations with World Wildlife Fund WWF. हमने रिसेंटली लास्ट ईयर, पिछले 2 सालों से हम लोग ओडोनेट मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं इधर कश्मीर से. तो हमारी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर से जो डेटा कलेक्ट कर रही है अबाउट ओडोनेट्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग जितना भी फ्लोरा फौना है यहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में नॉलेज पता चल रही है, उसके बारे में लोगों को ग्लोबली पता चल रहा है. इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशंस या स्नो लेपर्ड एक्सप्लोरेशन पे NCF के नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ एक नेशनल जोग्राफिक एक्सप्लोरर ग्रांट हमें मिला है, जिसमें अगेन हम लोग आउटरीच पार्टनर्स हैं उनके NCF के साथ. जिसमें there are nature camps which are being conducted in Gurez, Bandipora and Kishtawad areas. We go and talk to students, we bring them more close to this natural spaces. We tell them about the animals that are present in their habitats, and so that people get to know more about such things. The foundation also conducted Kashmir's first online wildlife photography competition during COVID-19, which received more than 1,000 photos of birds, animals and insects from more than 150 participants across Jammu and Kashmir and Ladakh. So अगर हम कश्मीर सिनेरियो को देखें, यहाँ पे लोगों को कितनी अवेयरनेस है अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो इफ़ आई हैड टू रेट इट कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, आई वुड रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 की स्केल में मैं 1 या 2 की लेवल पे रखूँगी इसको. People are aware of what is available. For example, आप किसी को भी जाके पूछो, they would know what hangul is, they would know what bear is, they would know what a leopard is. They know these for very wrong reasons. But unfortunately, इससे ज़्यादा हमारे common masses को पता नहीं है what is there in our forests or what is there as far as bird diversity is concerned. So अगर compare करना है मुझे to rest of the India, we are very far away from their level of knowledge. And but very interestingly, हमने कोविड के दौरान एक ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था. एंड उसमें
it was open for all. Anybody could post their photos on Facebook. We ran it for a month. This was to start up an idea जिसमें हम लोगों को एक mindfulness का आइडिया दे सके. मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानवर हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी चींटियाँ, बटरफ्लाइज, वट एवर यू सी अराउंड, यू ऑब्जर्व दैम. तो ऐसा कुछ हमने करने की कोशिश की थी. एंड क्योंकि फेसबुक इज़ रेडिली अवेलेबल, हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है, हर किसी के पास कैमराज है, तो हमने उस कंपटीशन में वी आस्क्ड देम टू सेंड फोटोज़ ऑफ बर्ड्स, मैमल्स और इंसेक्ट्स. तो उसमें हमने कुछ ऐसा, ये एक बुक कंपाइल की वाइल्ड फ्रेम्स करके. और इस बुक में अगर आप देखें तो दिस बुक इज़ बेसिकली अ फोटो बुक ऑफ ऑल द बर्ड्स, of all the mammals that we find here, of all the insects that we find here. And interestingly, these photos are taken by very local people, very common people. They are not professional photographers, they know nothing about photography, but this has something which has been compiled up. इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बट ऐसा ये है कि मे बी लोगों को कभी किसी ने बताया नहीं कि देर आर दीज थिंग्स विच आर अवेलेबल एंड यू हैव टू शोकेस देम इन सम वे और दी अदर. हम लोगों ने अभी रिसेंटली वी हैव फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम कश्मीर. वी हैव फाउंड insects which were not recorded here for the past 100 years or so. And we speculate that this is mostly because of the rising temperatures that we have had here for past few years. हमने birds ऐसे records किए हैं. Little Tern is we have a publication also in Journal of Bombay Natural History Society, as well in JOT. Recently हमने paper publish किया है जिसमें हमने ये bird का एक range extension एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों ये नए नए रिकॉर्ड्स हमको इन जगहों से देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पे पिछले 100 सालों से रिकॉर्ड्स नहीं थे. The foundation's works is supported by the Anil Kumble Foundation, CCMB Hyderabad and National Mission for Himalayan Studies. So there are concerned departments वो जो कि specifically wildlife protection के लिए काम करते हैं. हम उनके साथ भी काम करते हैं collaboration में. हम उनको suggestions देते हैं because we are group of researchers, scientists who can think more broadly. Not all administrators know how to handle certain things. So we as researchers, or we as somebody who is spent some 7, 8, 10 years or more than that in this field of science, it will be better if there is a better collaboration between these two, जो कि कहीं ना कहीं lacking है इस state में at least. So one thing जो मुझे लगता है कि suggestion है is governments or government bodies should consult certain experts, should consult researchers in whatever policy making they do. I'll give you an example. Recently we were called to DC by DC Bandipora related to human wildlife conflict in that area, and the whole जो भी मीटिंग हो रही थी that included experts who are experts in wildlife, somebody who has worked in human animal conflict, somebody who has worked in agriculture, somebody who has worked in horticulture. So ये सारे लोगों का एक साथ एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें हमने we came up with some solution and we came up with some policy. So policies are something which should be consulted. Experts should be consulted and policies should be made and implemented. Don't keep those policies in the papers. Just implement those policies, whatever policies it is.